Hello? आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. कल हमने देखा था व्हाट आर स्टब फंक्शंस, है ना? फिर हमने कुछ चीज़ें भी उनके बारे में देखी थी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था इट्स पॉसिबल that you can always write a step function in what we call its standard representation. That means every step function has a standard representation. ठीक, then we also saw what we mean by the Lebesgue integral of these step functions. ठीक, वो भी हमने कल देखा था। अगर आप चाहे तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। This is the ये है, this is the definition. पहले हम देखेंगे definition of step function. A step function is a simple function which vanishes outside a set of finite measure. ठीक, फिर हमने देखा था कि you can always write a step function. If phi be a step function, then it's always possible to write this phi in this way. What is this? It's a linear combination of characteristic functions. And in this इस linear combination में ये जो sets आप देख रहे हैं ना, which are the base sets or which are the supports of these characteristic functions, इनमें कुछ properties होती है. If it's a अगर ये standard representation है तो फिर इन AIs में कुछ properties होती है. पहली property ये होती है कि that these AIs are what? They are measurable, they are pairwise disjoint and they have finite measures. ठीक, फिर इसके बाद हमने define किया था Lebesgue integral for these step functions. This is the definition. If phi is a step function and if this be the standard representation of phi, then the Lebesgue integral of phi with respect to measure mu is defined by this. It is AI mu star AI summation where I runs from 1 to k. So yeah, all you need to do is this. You need to multiply the measures of these sets by their corresponding, जो इनके यहाँ इस लीनियर कॉम्बिनेशन में ये जो इनके करस्पॉन्डिंग स्केलर्स है उन्हीं से इनको मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू नीड टू टेक द सम. Thereby you'll get the Lebesgue integral of the step function phi. आज हम कुछ और चीजें देखेंगे related to this Lebesgue integral for step functions. मैं आपको दिखाऊंगा the Lebesgue integral for step functions is linear. ठीक, उससे पहले हम कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर. तो पहली चीज है वो ये है, if XS mu be a measured space, if this be a measured space and phi comma psi be two step functions defined on X, then अगर आप gamma define करेंगे as phi plus psi, ठीक, and gamma defined by this phi plus psi, this is also a step function. आप ये देख सकते हैं कैसे? स्टेप फंक्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? इट शुड बी अ simple function in the first place. Now sum of two simple functions is a simple function. Simple means measurable and assumes only finite number of values.
So if phi and psi are step functions, they must be simple also. So therefore phi is measurable and assumes only finitely many values. Same is the case with the psi. Psi is also measurable and assumes only a finite number of values. Sum of two measurable functions is a measurable function, so this is a measurable function. And since phi and psi assume only a finite number of values, so therefore their sum will assume only a finite number of values. So gamma is a measurable function which assumes only a finite number of values. So therefore gamma becomes a simple function. ठीक? अब मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ this gamma is not just a simple function, it's a step function. That means it vanishes outside a set of finite measure, right? अब वो कैसे है वही मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ. ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है. जो चीज आपको यहाँ पता है वो ये है कि that this phi and this psi, they are both step functions. So that means phi will vanish outside a set of finite measure and psi will vanish outside a set of finite measure, right? Let's suppose this. Suppose this is the set, let's call it E1. Let's suppose E1 is the set of finite measure outside which phi is 0. So that means E1 के बाहर जो आपका phi है, it will be 0. And this E1, it's a set of finite measure. It's measurable and it has finite measure. U star E1 is finite. ऐसा एक set होगा. क्यों? Because phi is a step function. In the same way, since psi is also a step function, तो यहाँ एक और set होगा. Let's call that set as E2. और मान लीजिए this is E2. ये जरूरी नहीं कि डिसजॉइंट होंगे, ये इनका इंटरसेक्शन भी हो सकता है, जरूरी कि ऐसे ही होंगे. बट एक चीज सर्टेन है कि इन दोनों का मेजर फाइनाइट होगा. U star E2 is finite. ऐसा भी एक सेट होगा. Why? Because psi is also a step function. Now if I take E, ये ध्यान से देखेंगे आप. If E be equal E1 union E2, आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं ये और ये जो सेट है इन दो का यूनियन ले रहा हूं और उस सेट को मैं E से डिनोट कर रहा हूं. ठीक. Then mu star E, which by the definition of E is mu star of E1 union E2, and then by finite subadditivity this is less than or equal mu star of E1 plus mu star of E2. What's mu star E1? It's a finite quantity. Mu star E2 is also a finite quantity. Sum of two finite quantities is a finite quantity. So it's a finite quantity. So that means mu star E is finite, right? Now if X is not in E, if X is not in E, then chunki E is the union of E1 and E2, then X is neither in E1 and X is nor in E2. ये दो में से किसी में भी नहीं होगा. Now we know that outside E1 phi is 0. E1 के बाहर phi 0 है और E2 के बाहर psi 0 है. So that means इस X पर चूंकि ये ना E1 में है ना E2 में है, so इस X पर phi as well as psi, they will be both 0. So therefore their sum will be 0, right? This will be 0 plus 0, which is 0. But what is phi plus psi? This is gamma at X. So that means gamma at X is 0. ये X कहाँ से लिया था आपने? X is not in E. That means gamma vanishes outside E. Not in E means outside E. What's E? It's a set of finite measure. So gamma also vanishes outside a set of finite measure.
So that means gamma is a step function. So कहने का मतलब ये है कि if you take two step functions, their sum is again a step function. So that means इसको अगर आप record करेंगे, it means this. आप ऐसा remark लिखिए. The collection ऐसे आप इसको denote करिए. It's not S, it will be fancy S, या script S. S, script S, या fancy S of step functions over the measure space x s mu. और एक चीज ख्याल करिएगा, don't confuse this with this. This s is the semi-ring, whereas this is the collection of. इसीलिए मैं इसको ना थोड़ा ये फैंसी टाइप लिख रहा हूँ. अब हम वहां ऊपर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं the collection, this fancy s of step functions over this measure space is what? It's closed under addition, under addition of functions. ठीक है. एक और चीज, ये तो हो गया. अब एक और चीज आप देखें. लेट्स अगेन टेक मेजर स्पेस एक्स mu, और मान लीजिए फी इज अ, ये है हमारी मेजर स्पेस, ये होगी हमारी मेजर स्पेस इन दिस डिस्कशन. दिस फी विल बी अ स्टब फंक्शन and alpha will be a scalar, a real scalar. Then अगर आप इसे देखेंगे alpha phi, this is clearly a simple function because phi is a simple function. It's a step function. Step functions are simple also. So this is a simple function. ठीक. और चूंकि ये अल्फा यहाँ ना, ये this is alpha times phi, so this will vanish whenever phi vanishes. Now we know that phi vanishes outside because it's a step function, so it must vanish outside a set of finite measure. So that means alpha phi must also vanish outside a set of finite measure. So that means alpha phi is a simple function which vanishes outside a set of finite measure. So that means alpha phi is also a step function. This is also a step function. तो कहने का मतलब ये है कि that the collection, this जो अभी हमने ऊपर जिसको हमने denote किया था by fancy s of these step functions over this measure space x s mu, this is also closed under scaling. That means आप इसको भी as a remark आप note करेंगे. The collection, मैं ये थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ because these are, मतलब ये आप easily ना खुद भी देख सकते हैं. The collection, हमारा मेन जो है ना वो टॉपिक आज का होगा the linearity of the integral. फिलहाल के लिए this is my second remark. और यहाँ हम देख रहे हैं that the collection fancy s of all possible step functions over the measure space x s mu, this is closed under what? Under function scaling. Now if you combine these two remarks, वहां से क्या निकलेगा आपको? It's closed under addition, it's closed under function scaling, it's closed under function addition because addition means function addition in this case. और यहाँ आप देख रहे हैं it's also closed under function scaling. That means what? अगर अपन को इन दो remarks को collectively देखेंगे तो वहां से आप क्या हासिल कर सकते हैं फिर? बताइए. It's a vector space. The third observation जो हमारी होगी, जो आपको मिलेगी when you combine these two observations, the collection fancy s of all possible step functions
or x s mu is a vector space or it's a vector space or what is the scalar field? Scalars कहाँ से लिए थे मैंने? और it's a vector space होगा. ठीक. अब आप वो जो कल हमने Lebesgue इंटीग्रल डिफाइन किया था ना, और दिस कलेक्शन और फॉर स्टफ फंक्शंस, जो हमने कल Lebesgue इंटीग्रल डिफाइन किया था फॉर स्टफ फंक्शंस, दैट मींस ओवर दिस कलेक्शन, उसको आप एक डिफरेंट नजरिए से भी देख सकते हैं. अगर आप बाय द वे देखेंगे, इफ कल वाली डेफिनेशन पर अगर आप वापस जाएंगे, आप यहाँ देख रहे हैं, phi is a if this phi is a step function, then the Lebesgue integral of phi, which is denoted by this symbol, is defined by this. It's equal to this. ये क्वांटिटी क्या है? What is this? इसका नेचर क्या है? मुझे आप बता सकते हैं? What is this quantity? जो यहाँ से है ये, ना ये sigma I running from 1 to k ai mu star ai. इसका नेचर क्या है? ये कहाँ रहती है? ये ऑब्जेक्ट किस दुनिया से आ रहा है? It's a real number. So that means integral, it converts step functions into real numbers. अब इसी को आज हम वहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे सबसे पहले. तो हम ये भी अब देख सकते हैं, फिर अगर ये चीज़ें हम अपने जहन में रखेंगे, then we can see that the integral जो हमने कल डिफाइन किया था, ठीक, it's actually a mapping from the integral for, what is this? This is integral for the step functions. This is integral for step functions. Yeah, तो अब आप इसको अब ऐसे भी देख सकते हैं that it's a what? It's a mapping from this collection, and it takes elements of this collection onto what? Onto real numbers. So that means it's a mapping from this collection of step functions into R. What is R? R is the scalar field for this vector space. और ऐसी mappings को आप क्या कहते हैं? A mapping from a vector space into its scalar field. These are called, आप इसे functional कह सकते हैं. It's a functional. मैं आपको दिखाऊंगा it's also a linear functional. That means it has linearity. ठीक है? This will be our theorem. Basically linearity के लिए आपको बस additivity दिखानी है, क्योंकि homogeneity तो trivial है. अब पहले ये theorem नोट करिए. Let x s mu be a major space and phi comma psi b2. इसका प्रूफ आसान है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट आपको फिर भी ना केयरफुल रहना है. आपको अपना दिमाग आपने ओपन रखना है. आपको सोना नहीं है. यहाँ पर अपने हाथ में कॉपी और पेन, ये पेन आप रखेंगे तो आपको समझना है कि आपका मोबाइल फोन आपका बोर्ड है, जो आप क्लास में आपके सामने रहता है ना, व्हाइट बोर्ड. आपको यहाँ वही समझना है. This be a major space and phi and psi be two step functions. On this major space. Full stop. Now if gamma be equal to phi plus psi, then we know that this, ये हमने already ऊपर देखा, gamma, this also will be a step function, because sum of two step functions is a step function. Then the theorem says this,
देन चूंकि अब ये स्टफ फंक्शन है तो एंड वी नो हाउ टू इंटीग्रेट स्टफ फंक्शन, सो आप इस गामा को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड थ्योरम सेज दिस, सेज इंटीग्रल ऑफ gamma d mu, this will be equal integral of phi d mu plus integral of psi d mu. What's gamma? आप इसको यहाँ further कुछ और भी ऐड कर सकते हैं because gamma is actually phi plus psi. So this integral, this can also be written as integral of phi plus psi d mu. That means theorem आपसे कहती है integral of sum is sum of integrals. अब ये चीज एब्स्ट्रैक्ट इंटीग्रल के लिए भी सही है, जो आप वो रीमान इंटीग्रल में जो आप इस तरह की चीज देखते हैं ना, वो यहाँ भी ट्रू है. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ. अब चूंकि आपको क्या करना है, यू नीड टू इंटीग्रेट स्टफ फंक्शंस, और इंटीग्रेशन के लिए जो अभी हमारे पास वो अवेलेबल है, और मैं अभी उसको डेफिनेशन कहने में अभी रिलक्टेंट हो, क्योंकि वहाँ एक टेक्निकलिटी थी जिसको हमने फिलहाल के लिए इग्नोर ही कर दिया है. बट इस थ्योरम के आखिर में वो हम उस टेक्निकलिटी को भी एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली वहाँ ना अभी हमने वो एम्बिग्यूटी इश्यू को एड्रेस नहीं किया था. व्हाट इफ, क्योंकि हमें अभी नहीं पता हम जो कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग इट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ एक खतरा अभी है, व्हाट इफ दी जो आप वहाँ लिख रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अगर आप कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं, इट शुड बी फ्री ऑफ एम्बिग्यूटीज. और वहां अभी एक एम्बिग्यूटी है, वो मैं आपको इसके लास्ट में बताऊंगा. ये भी आपने बता वो चीज ऑब्जर्व नहीं करी होगी अभी, मैं वो खुद यही से वो बताने जा रहा हूँ. फिर फिलहाल के लिए जिस तरह से हमारा जो वो गाइडलाइन है इस लेबेग इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने की, उसके हिसाब से हमारे पास क्या होनी चाहिए, पहले स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस. वी रिक्वायर, उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. नाउ दीज आर स्टफ फंक्शंस, उनकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस होंगी, तो हम पहले उन्हीं को लेंगे यहाँ पर. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप ऐसे लिखिए, लेट फी बी इक्वल सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 तो इसमें आप लीजिए n ए आई काय सब ए आई comma psi b equal that this equal to this, psi equal to this. इसमें हम लेंगे डिफरेंट सबमिशन इंडेक्स यहाँ इस्तेमाल करूँगा. J runs from 1 to m b sub j chi sub b sub j and gamma equal I इसमें हम लेंगे I j, let's say k, I j k running from 1 to r c sub k, characteristic function of capital C sub k. Let this and this be the standard representations of phi, psi and gamma respectively. ठीक है, मैं एक चीज ना यहाँ आपको बताना चाह, हालांकि ये कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था. When I say these are standard representations, इस चीज की फिर कुछ implications है, आप मुझे बता सकते हैं वो क्या होंगे फिर? These are standard representations, so that means जो ये स्केलर्स आप यहाँ देख रहे हैं, little ai's, little bi's and
सॉरी लिटिल AIs, लिटिल BJs एंड लिटिल CKs। इनके बारे में आपको क्या पता है फिर? AIs, Non-zero. BJs and CKs, they are distinct and non-zero. मतलब AIs internally are distinct. Same is the case with BJs. Internally they are distinct, and same is the case with these CKs. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि no AI is equal, मतलब AIs में कोई भी BJs के बराबर नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं। ऐसे लिखना भी गलत होगा वैसे, वन बाय वन लिखेंगे। AIs are distinct and non-zero. Same is the case with BJs. BJs are also distinct and non-zero. Same is the case with CKs. CKs are distinct and non-zero. ठीक, और क्या पता है आपको? क्योंकि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस अभी भी कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ से डिड्यूस या इन्फर कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दैट AIs are measurable and pairwise disjoint. Same is the case with BJs. BJs are also measurable and pairwise disjoint. Same with CKs. CKs are also measurable and pairwise disjoint. इसका रीजन ये है because जो AIs है वो basically क्या है? What are AIs actually? They are those x's in X such that phi at X is little AI. क्योंकि little AIs ही आपके distinct है तो obviously these capital AIs will also be disjoint, pairwise disjoint. और measurable is there because phi is measurable function. तो ये होंगे measurable sets. The same way BJ is what? It is those x's in X. What is BJ? Such that तो मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ? Psi of x is हाँ, equal to psi of BJ. X is BJ, right? And CK कहाँ होगा? CK will be those x's in X such that gamma at X is little CK. ठीक, हमें ये भी पता है। अब एक और चीज जो कि आप AIs मार रहे हैं ना, दे आर नॉन जीरो, तो इट मीन्स दिस ऑल्सो। It means if X belongs to union I runs from 1 to n AI, then phi at X this will be non-zero. क्या ये सही है? क्योंकि अगर यूनियन में है तो इट मीन्स किसी न किसी AI में होगा, और अगर AI में है तो मीन्स वहां पर वैल्यू होगा लिटिल AI, and little AI for I equal to 1 to n are all what? They are all non-zero. This is true for I equal to 1, 2, so on up to n. Same is the case here. BJ's are distinct and non-zero. This is true for j equal to 1, 2, so on up to m. और यहाँ finally CK's are distinct and non-zero. This is true for k equal to 1, 2, so on up to r. Right? अब चूंकि आप कह रहे हैं कि x is in the union, it would mean that x is in some AI, and x in some AI means p at x must be some little AI where I runs from 1 to n. और हमें पता है कि little AIs for I equal to 1 to n are non-zero, so phi at x is non-zero. Same is the case here. अगर आप x लेते हैं in the union j runs from 1 to m b sub j, then psi at x will be non-zero. And similarly, if x belongs to union k runs from 1 to r c sub k, then gamma at x will be non-zero. याद रखिएगा, maybe इसका इस्तेमाल हम करेंगे, मतलब these are actually
सर्टेन थिंग्स जो आपको आपके जहन में होनी चाहिए वाइल राइटिंग द प्रूफ, इससे आपको वो कंट्रोल रहेगा ओवर द प्रूफ। यू वोंट बी एट द सिक्स एंड सुना यूजुअली जब हम अगर आप ध्यान से चीजों को नहीं देख रहे तो आप ना फिर एट टाइम्स मैथमेटिकल प्रूफ्स में आप फिर ना वो आपको ये बोरिंग लगता है फिर। तो बेहतर है आप पहले ये चीजें जहन में रखिए और ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ, जो मैं कर रहा हूँ आप खुद भी करिए। अब फिलहाल के लिए ये है वी हैव स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं ना इस पे आप जो यहाँ जो हमें जो टूल्स चाहिए वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम ये करेंगे इफ ई, आई एम डिफाइनिंग एन ई, और ये ई क्या लूंगा मैं, इसे आप देखिए। इफ ई बी डिफाइंड एज यूनियन आई runs from 1 to n a sub I union j runs from 1 to m b sub j, if e be this, ठीक, then this e is mu star measurable, is a mu star measurable subset of x, है या नहीं? The reason is because it's union of measurable sets. AIs and BJs they are measurable, so E is measurable. ठीक है। अब एक और चीज और मैं ये आपसे पूछूंगा, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। फिलहाल ये तो हो गया, इसका रीजन मैंने अब खुद ही आपको बताया। फर्दर अगर आप म्यू स्टार ई को देखेंगे, दिस इज यूनियन, तो और हमें नहीं पता वेदर द सेट्स ए आईज बी जेज या डिसजॉइंट आर नॉट। हाँ मेजरेबल तो है ये, बट डिसजॉइंटनेस का नहीं पता। Internally AIs are disjoint, internally BJs are disjoint, but AI BJ intersection empty है या नहीं, we don't know that, ठीक। तो आप additivity तो यूज नहीं कर सकते, हाँ you can use sub additivity, so this will be less than or equal to sigma I runs from 1 to n mu star AI, then plus sigma j runs from 1 to m mu star bj, और मैं आपसे कह रहा हूँ दिस प्लस दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, मुझे बताइए क्यों? हाँ दिस, ये असल में इसका राज भाई स्टफ फंक्शन की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में ही छुपा है। जब आप कहता है कि दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, तो वहां से जैसे मैंने आपको कल दिखाया था वहीं से ये फॉलो होता है कि दैट these AIs in the measure are finite. Mu star AI will be finite. Same is the case here. Mu star BJ, they also will be finite. ठीक है। तो this mu star is a finite, is a measurable set with finite outer measure. यहाँ फुल स्टॉप। एक और चीज यहाँ जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व दैट, क्योंकि ये आप इमीडिएटली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व दैट x not in E, it implies x is not in the union k runs from 1 to r c sub k। क्या ये सही है? If x is not in E, it would mean x is not in the union. Yes, sir. कैसे? सर अगर x E में नहीं है, हाँ इसका मतलब है कि उसका phi of x और psi of x दोनों 0 होंगे। एग्जैक्टली, फाइव और सा ये दोनों जीरो होंगे, तो देयर सम विल बी जीरो
So that means gamma x will be 0. 0. So that means x कहाँ नहीं आ सकता? It cannot be in the union of C case because union of C case में जो x है वहां पर gamma non zero है. आया समझ? So it's not. So not in the union, sorry, not in E implies not in the union. अब इसका मतलब क्या है फिर? And therefore, बता सकते हैं आप में से इसकी लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है फिर? This is very important as far as the proof is concerned. तो और ये आसान भी है, मतलब not in E means not in this. अब logically इसका मतलब क्या होगा फिर? It means union K runs from 1 to R C sub K. This is a subset of E. आप देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कोई पॉइंट यहाँ नहीं है? मतलब if you take some x here, is it possible कि वो x यहाँ नहीं होगा? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं ना, नॉट इन ई मीन्स नॉट इन द यूनियन. तो अगर यूनियन में है तो वो ई में भी होना चाहिए. तो जो भी चीजें यूनियन में है वो ई में भी है. सो दैट मीन्स द यूनियन इज कंटेन्ड इन ई. अब अगर आप ई की डेफिनेशन को देखेंगे, द यूनियन ऑफ ए आईज इज कंटेन्ड इन ई, दैट इज ट्रिवियल, है ना, बिकॉज ई इज यूनियन ए आईज, यूनियन बीजेज. So union AIs is contained in E, it's trivial. Union BJs is contained in E, it's also trivial. और ये जो है ये slightly non-trivial है. Union C case is contained in E, but it is also true. This is also contained in E. ये डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है. ये दिस इज द वे, जिससे आप ये देख सकते हैं. पर बेसिकली आपको ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखनी है. X in union means gamma is non-zero. तो अगर गैमा जीरो है किसी x पर, वो x फिर यूनियन में नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इन द यूनियन ऑफ सी केस. यहाँ तक ठीक है? फुल स्टॉप. अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर. नाउ इफ वी डिफाइन, अब इसमें हम कुछ एडिशनल चीजें इंसर्ट कर रहे हैं इस प्रूफ में. इफ वी डिफाइन, अभी तक जो ए आईज थे ना आपके, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये जो ए आईज जो देख रहे हैं अभी तक इस प्रूफ में, वहां जो आई है इट रन्स फ्रॉम 1 2 so on up to n. अब इसमें मैं एक और सेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ which is a नॉट. और ये a नॉट क्या होगा? इट विल बी, we define a naught as E minus the union. I runs from 1 to n a sub I. This will be a naught. इसी तरह से b naught. b naught will be E minus union. अब गैस कर सकते हैं क्या होगा ये? J runs from 1 to m b sub j. हम अभी कुछ और भी चीजें है ना इंट्रोड्यूस करें. We also introduce capital C naught, and it will be defined as E minus union K runs from 1 to R C sub K, right? This will be C naught. इसके बाद we'll also define little a naught. Little a naught, it will be defined as 0. In the same way, little b naught, this also will be defined as 0. And finally, little c naught, this also will be defined as 0. अब ये देखिए, a naught is this, b naught is this, c naught is this, little a naught is this, little b naught is this, little c naught is this. अब वो अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी ना, यूनियन इज कंटेन्ड इन ई, ये तो व्हाट इज सी नॉट देन?
बाय द वे ये जो है ना, ये यूनियन इज कंटेनर्ड इन ई, अगर आप इसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस इज ई, यूनियन कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। यूनियन के runs from 1 to r, c sub k, ऐसे होगा। so what is c naught? c naught is this ring shaped region। और इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, a naught also will be ring shaped region because union of ai's is contained in e। same is the case with this union bj's, it's contained in e, so b naught will also be a some sort of, इस तरह से आप इसको देख, it's actually a ring shaped region। so therefore जिस तरह से यहाँ अब c naught is the ring shaped region, this, so it has nothing to do with these ck's where k runs from 1 to r। मेरी बात समझ रहे हैं आप? this c naught and these ck's have nothing in common। और ऑलरेडी हमें पता है कि that जो ck's है, they are what, they are measurable and pairwise disjoint। so if ck's are disjoint for k equal to 1 to r, अब इसमें आप c naught इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड c naught जो है उसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा विद these ck's। so इसका मतलब क्या होगा फिर, it means this collection c naught, c1, c2, so on up to cr, this is also collection of pairwise disjoint measurable sets। मैम यहाँ मेजरेबल भी कह रहा हूँ बिकॉज ये तो ऑलरेडी मुझे पता है, दीज आर मेजरेबल। ठीक, अब अगर मैं इसे मेजरेबल कह रहा हूँ इस कलेक्शन को, मतलब अगर इन सेट्स को मैं मेजरेबल कह रहा हूँ, तो मुझे बस एक चीज इंश्योर करनी है कि दैट दिस सी नॉट इज मेजरेबल। क्या ये सी नॉट मेजरेबल है? इट इज Yes. मेजरेबल बिकॉज इट्स बेसिकली माइनस मीन्स इंटरसेक्शन विद द कॉम्प्लीमेंट, इट्स मेजरेबल। ठीक, अब जो ऑब्जर्वेशन जहाँ आप देख रहे हैं इन्हीं को हमें लिखना है। बेसिकली ये ध्यान में रखना है आपको, और फिर आप, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप क्या क्या डायरेक्टली या रेडिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ वी, हम कैसे लिख रहे हैं, इफ वी डिफाइन, अब इसको ऐसे लिखिए कॉमा, देन वन कैन इजीली सी दैट, पहली चीज, एक मिनट आप ऐसे ही रहिए।
सॉरी मुझे थोड़ा सा काम था पहले, वो देख रहा मैं. So one can easily see that uh, these AIs from A0, A1, A2, all the way up to AN are measurable and pairwise descent. And when I say measurable, I mean mu star measurable. Mu star measurable and pairwise descent. ठीक. Same is the case with these B0, B1, B2, so on up to Bm. They are also mu star measurable and pairwise descent. Fine. Pairwise descent sets. Third, C0, capital C0, C0, C1, C2, so on up to CR are pairwise disjoint mu star measurable sets. Think the fourth one is this. If we take this union, I runs from 0 to n a sub I. उसके बाद अगर आप ये यूनियन लेंगे, union j runs from 0 to m b sub j, and this union k runs from 0 to r c sub k. आप मुझे बता सकते हैं इन तीन यूनियंस में क्या रिलेशन होगी? equal. हाँ, they will be all equal. और किसके बराबर होंगे ये? E. Exactly. This and this, they'll be all equal to E. ठीक है? And the fifth property, जिसको हम further pursue करेंगे यहाँ पर, for each k in the set 0, 1, 2, so on up to r, अगर आप c sub k को देखेंगे, अब देखिए, I can write c sub k as c sub k intersected with E. Am I right? हाँ, लिख सकता हूँ because c sub k's are subsets of E. Their union is E. So therefore they are subsets of E. So c sub k intersected with E will be c sub k, right? Now this is further equal to c sub k intersected with, अब देखिएगा मैं क्या करूँगा यहाँ पर, I'll write union I running from 0 to n a sub I intersected with union j running from 0 to m b sub j. क्या ये सही है? आपने देखा ऊपर this union of AIs as I runs from 0 to n and union of BJs as j runs from 0 to m, ये दोनों unions equal है और किसके बराबर है ये? They're equal to E. So this is actually E intersection E, and E intersection E is E, so this and this they are same. ठीक है? अब पता है यहाँ क्या करेंगे हम? Will first distribute this, basically will first distribute, इसे आप देखेंगे as a whole, इसको देखेंगे आप as a one set, right? And then you'll distribute this intersection over this union. तो ऐसा करने से क्या बनेगा आपको? So this is equal to CK
intersected with, अभी काम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, so you'll distribute this intersection over this union. It will be union j runs from 0 to m b sub j, ठीक, then what, intersected with, आप ये union distribute कर रहे हैं, so intersected with union I runs from 0 to n a sub I, ठीक है, तो ये आएगा, मिलेगा आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर दिस यूनियन। तो जब आप ऐसा करेंगे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस, यू विल गेट c sub k intersected with union I runs from 0 to n, now this will be double union, j runs from 0 to m a sub I intersected with b sub j। और फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला जो इंटरसेक्शन है इसको भी अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर दिस यूनियन। So finally you'll get this, it is equal union I runs from 0 to n union j runs from 0 to m c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j, ठीक है, ये क्या था, दिस वाज पॉइंट नंबर 5। अब आप ये लिखिए इसके बाद, ऑब्जर्व दैट द सेट्स appearing in the extreme RHS, that means right hand side of point number क्या था ये 5 of 5 are pairwise disjoint। क्या आप ये देख सकते हैं कैसे, मतलब यहाँ ये जो आप यहाँ इसमें ये जो सेट्स देख रहे हैं ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ए आई बी जे intersected with सी की as I runs from 0 to n, j runs from 0 to m, ये जो सेट्स आपको यहाँ मिलेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ they are all what, pairwise disjoint। इनफैक्ट मेजरेबल तो है ही है, बिकॉज ए आई बी जे सी की दे आर ऑल मेजरेबल, तो आप वो भी लिख सकते हैं दैट pairwise disjoint measurable sets। measurable needs no elaboration, हाँ pairwise disjointness को आपको देखना है, लेकिन वो भी आसान ही है। इनफैक्ट यू शुड बी एबल टू ना identify the reason that why are they pairwise disjoint or pairwise disjoint measurable sets। बता सकते हैं आप कैसे, इसका राज असल में यहाँ छुपा है। आप कह रहे हैं ना ऑलरेडी ए आईज एंड बी जेज दे आर pairwise disjoint, ठीक, तो ये जो सेट्स है दे विल बी pairwise disjoint एंड मेजरेबल तो है ही, सो दे आर pairwise disjoint एंड measurable, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। Now they are pairwise disjoint and measurable, so you can use additivity। additivity ऐसे ही केसेस में इस्तेमाल होती है ना, जब आपको मेजरेबिलिटी भी होती है और pairwise disjointness भी होती है, अब दोनों है यहाँ पर, so you can use additivity of mu star, और क्या मिलेगा आपको, therefore mu star of, ऐसे लिखेंगे mu star of c sub k किसके बराबर आएगा ये, this will be equal the sum of the mu stars of these sets, so it will, in fact it will be double sum, क्योंकि यहाँ दो है ना इस यूनियन लाइन, so it will be sigma I runs from 0 to n sigma j runs from 0 to m, this is 0, okay, mu star of c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j, ये ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना, ठीक। इसे आप कोई लेबल दीजिए, आई थिंक हम इसको लीटरन यूज करेंगे, लेट्स कॉल इट स्टार,
इसके बाद next we claim that for each I in the set 0, 1, 2, so on up to n, comma j in the set 0, 1, 2, so on up to n, and k in the set 0, 1, 2, so on up to r. अगर आप इसे देखेंगे c sub k, और मैं आपको बता रहा हूँ this thing will hold for each I, j and k. C sub k times mu star of, this is little c sub k, huh? Mu star of capital C sub k intersected with a sub I intersected with b sub j. Our claim is that this is equal to a sub I plus b sub j times mu star of the same set जो वहाँ left side में आपके लिया, mu star of c sub capital. Capital ही लिखा हूँ लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिखना है मुझे so that I don't confuse this c sub k with this little c sub k. Intersected with a sub I intersected with b sub j. ठीक है, दिस इज माई क्लेम, और आप इसको रखेंगे डबल स्टार से, आप इसको लेबल करिए. फिर इसके नीचे आप ये लिखिए जो क्लेम है ऊपर डबल स्टार में, द क्लेम इन डबल स्टार इज ट्रिवियली ट्रू इफ c sub k intersected with a sub I, जो सेट यहाँ आप जिसका म्यू स्टार लिया गया है, if this set is empty then the claim is trivially true. है या नहीं? अगर ये empty है ना ये सेट, तो इसका म्यू स्टार 0 होगा, और म्यू स्टार 0 होने का मतलब है कि दिस साइड विल बी 0, दिस साइड विल बी 0, 0 is equal to 0, so there is nothing to prove actually if this is empty. Full stop. So अब क्या हम assume करेंगे? We assume आप यही हो. So we assume c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j is not empty. Full stop. Let now this is non-empty, तो यहाँ से आप एक पॉइंट आप पिक कर सकते हैं. So let x be in c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j. ठीक, अगर ऐसा है then अगर आप gamma at x को देखेंगे, मुझे आप बता सकते हैं क्या होगा? x belongs to the intersection, so it's in c sub k also, क्योंकि intersection में होने का मतलब कि in every set, so it's in c sub k. और c sub k में gamma value क्या, gamma values क्या है? ck. It is little ck. In fact it's true for, देखिए अगर x belongs to c sub k where k is equal to 1, 2, so on up to r, then gamma at x is little c sub k, right? Now question ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो k है आपका, it can also assume 0, क्योंकि k के लिए एक possible value 0 भी है. Now what if k is 0? k equal to 1 to r के लिए तो हमें पता है gamma x is ck. Now question is what if k is 0? So what will be gamma x in that case? 0. K is 0 means x belongs to c sub 0. X belongs to c sub 0, and what is c sub 0? C sub 0 is, it is e. It is e minus the union of c k's. तो मीनस ए इन c k's के बाहर होगा तो it will be 0.
और सी सब जीरो जो हमने डिफाइन किया था वो भी जीरो ही है, इसीलिए हमने सी सब जीरो, ए सब जीरो, बी सब जीरो, इनको जीरो लिया ताकि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ चाहे कोई भी केस हो, दिस इज इक्वल सी सब के, ठीक। नाउ gamma x is also equal, by definition it's actually phi plus psi, so this is phi x plus psi x. What is phi x? X also belongs to ai because it's in the intersection, so phi x will be little a sub I. In the same way, psi sub x will be little b sub j because x is also in bj, so it will be in a sub I plus b sub j, ठीक। And therefore the claim in क्या था वो स्टार, डबल स्टार, claim in double star follows, बताइए कैसे? You just need to multiply both sides by mu star c sub k intersected a sub I intersected b sub j, है ना। अगर आप इसके दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे you'll get precisely what's in double star. So double star is also true when this is not phi, this intersection, चाहे phi हो, phi केस में trivially true, not phi केस में भी true है, so it's true. So this establishes the in double star follows नहीं, क्यों follows जो गलत, claim in double star is established. So we have established the claim in double star, ठीक है। अब ये हो क्या बात समझना करूँगी ना आपको बस एक नाउ। अब हम डायरेक्टली जाएंगे इंटीग्रल पर। इंटीग्रल इंटीग्रल phi plus psi d mu, this is equal to integral gamma d mu, and integral gamma d mu करने के लिए आपको क्या चाहिए, you require the standard representation, right? So this is equal to, वो ऑलरेडी है हमारे पास, so this is equal to k runs from 1 to r little c sub k times mu star of capital C sub k, right? Now this is further equal, और मैं आपसे यहाँ पूछूंगा क्यों, k runs from 0 to r little c sub k mu star of capital C sub k, क्यों है ये और ये बराबर this sum and this sum। हालांकि apparently मैं इसमें एक additional term लिख रहा हूँ k equal to 0 वाली term, but that makes no additional contribution or no new, that adds no new information to this, ऐसा क्यों है? Reason is because c sub 0 is 0, जो टर्म आप ऐड कर रहे हैं ना इसमें बेसिकली वो 0 है, तो उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, ठीक है ना। And this is finite by the way, mu star c sub k. Why? Because c sub k's are contained in E. E has finite measure. So this is 0 times finite quantity. This is not 0 times infinity. हालांकि मेजर थ्योरी में ये याद रखिएगा 0 times infinity is, it's treated as 0 in most of the cases. But यहाँ तो वैसा भी नहीं हो सकता, it's actually a finite quantity. So ये and this they are same. अब पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके बाद, we'll use जो ऊपर हमने ना म्यू स्टार सी सब की कंप्यूट करके रखा है इन स्टार, इसी को हम यूज करेंगे। तो मुझे बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ ऑलरेडी एक समीशन है, जो चीज आप यूज करने जा रहे हैं उसमें वी आर गोइंग टू यूज स्टार, स्टार में 2 समीशन है, तो कुल मिला के नीचे 3 समीशन आएंगे। सो इट विल बी दिस, इट विल बी सिग्मा I runs from 0 to n, sigma j runs from 0 to m, sigma
k runs from 0 to r c sub k mu star of c sub k intersected with a sub I intersected with b sub c. This follows by using star. ठीक है, अब इसके बाद हम यूज करेंगे जो हमारा क्लेम है कहाँ पर, इन डबल स्टार c sub k टाइम्स म्यू स्टार इज इक्वल टू दिस. तो जब आप वो यूज करेंगे क्या मिलेगा आपको, दिस इज ट्रिपल समेशन I runs from 0 to n sigma j runs from 0 to m sigma k runs from 0 to r. ठीक, अब यहाँ क्या आएगा, a क्योंकि हमने वो देखा है ऑलरेडी, दैट इज ट्रू फॉर एवरी I j k. So this will be a sub I plus b sub j times mu star of what, mu star of c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j. राइट, अब ये देखिए इसमें I और J है, so it is free from K. इस समीशन में K है, तो this is a constant as far as this summation is concerned. तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं इस समीशन के. So it will be sigma I runs from 0 to n sigma j runs from 0 to m a sub I plus b sub j times sigma k runs from 0 to r, ठीक, mu star of c sub k, this is capital C sub k. हाँ, सेट्स को आपको कैपिटल लिखना है. ये टैबलेट में मेरा थोड़ा सा हाथ फिसल रहा है. c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j. अब मुझे आप में से कोई बता सकता है ये सम किसके बराबर होगा? एक चीज आप नोटिस करिए, ये जो सेट्स आप इसमें देख रहे हैं ना जिन पर ये म्यू स्टार लिया गया है, दे आर पेयर वाइज डिस्टेंट एंड मेजरेबल. सो द सम ऑफ मेजर्स विल बी मेजर ऑफ यूनियन बाय एडिटिविटी इन द रिवर्स डायरेक्शन. ठीक, सो इट विल बी व्हाट, एक्चुअली इट विल बी, दिस इज सम ऑफ म्यू स्टार्स. इसको आप लिख सकते हैं म्यू स्टार ऑफ यूनियन. और वो क्या होगा वो यूनियन, अगर आप देखेंगे, so it will be this basically. ये जो है ना sigma k runs from 0 to r mu star c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j, this is equal to mu star of union k runs from 0 to r c sub k intersected with a sub I intersected with b sub j. राइट, ये होगा. अब ये जो है ना, इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें k इन दो में ना, इस इंटरसेक्शन में a I इंटरसेक्शन b j, इसमें आप कहीं भी k नहीं देख रहे हैं. सो देयरफॉर इट इज कांस्टेंट एज फार एज k इज कंसर्न्ड. तो इसको आप इस यूनियन से बाहर निकाल सकते हैं. जैसे आप इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, वैसे आप इसको वापस बाहर भी खींच सकते हैं. दिस विल बी म्यू स्टार ऑफ a I intersected with b j intersected with union k runs from 0 to r c sub k. Right, what is union k runs from 0 to r c sub k? अपनी नोटबुक्स को देखिए. E minus C0? नहीं, it's e. So this is mu star of ai intersected with bj intersected with e. और हमें पता है ai's as well as bj's, they are both subsets of e. So that means this is a subset of e. Now intersection with e will be the subset. Subset will absorb the superset. So it will be ai intersected with bj. तो देखिए ये पूरा किस में रिड्यूस होता है? It all reduces to mu star ai intersected with bj.
मैं यहाँ अब यही लिखने जा रहा हूँ, मैं ये इतना सारा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा। लेकिन मैं आपने आपको रीजन बताया इसका, एक्चुअली ये जो है ना, दिस सम इट्स एक्चुअली म्यू स्टार AI इंटरसेक्शन बीजे, और यहाँ एडिटिविटी का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज I running from 0 to n sigma j running from 0 to m. So basically you have been successful in reducing this triple sum into a what? Into a what? Into a double sum. ये बहुत बड़ी बात है, ट्रिपल सम को रिड्यूस करना इंटू डबल सम। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें आप देखिए इस समीशन में जे वैरी हो रहा है और AI में जे नहीं है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। सो इनफैक्ट इसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस विल बी सिग्मा I running from 0 to n मेरे ख्याल से हम पहले इसे ब्रेक ही करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे सिग्मा j running from 0 to m AI mu star AI intersected with bj, then plus sigma I running from 0 to n sigma j running from 0 to m b sub j mu star a sub I intersected with b sub j, right? अब क्या करेंगे आप, अब वो करेंगे जो मैं अभी आपसे कह रहा था, इसमें j नहीं है तो इट्स कांस्टेंट एज फार एज दिस समेशन इज कंसर्न्ड। सो दिस इज सिग्मा I runs from 0 to n AI बाहर आएगा, देन सिग्मा j runs from 0 to m mu star AI intersected with bj, right? And similarly this is equal, अब यहाँ क्या करेंगे आप, आप पहले ये दो सम, ये जो है ना ये डबल सम, इसको आप ऐसे लिखेंगे पहले, इट कैन बी डन बिकॉज जो एडिशन है इट्स कम्यूटेटिव, फाइनाइट सम इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो आप सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 0 to n सिग्मा j रनिंग फ्रॉम 0 to m, ये दो समीशंस को आप इस तरह से कर सकते हैं। यू कैन राइट दिस एज, और पहले j को लिखेंगे देन r, इट्स पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज दे आर बोथ फाइनाइट सम्स। फाइनाइट सम्स को ऐसे किया जा सकता है। अब यहाँ j है और इस समीशन में i इंडेक्स है, तो j इज अ कांस्टेंट फॉर दिस, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। सो इट विल बी सिग्मा j runs from 0 to m b sub j, then sigma I runs from 0 to n mu star a sub I intersected with b sub j। अब आपको पता है ये जो सम है ये किसके बराबर होगा, दिस इज अगेन सम ऑफ म्यू स्टार्स, और ये जो सेट्स आप यहाँ देखा दे आर पेयर वाइज डिस्टेंट, सो यू कैन यूज एडिटिविटी, सो देयरफॉर इट विल बी म्यू स्टार ऑफ यूनियन। किसका यूनियन, द यूनियन ऑफ दीज सेट्स। So it will be AI intersected with union of BJ's. What's union of BJ's? That's E. So it will be AI intersected with E. AI is a subset of E, so it will be AI basically. So this will be actually mu star AI. So this is summation, जैसे अभी हमने देखा ऊपर, I running from 0 to n little AI times mu star of what, AI. ठीक, in the same way this will be plus sigma j running from 0 to m b sub j times ये जो है ये भी वही है, this is sum of mu stars, the sets are pairwise disjoint, so this will be mu star of their union। अब जब आप union यहाँ लेंगे it will be union of these as I runs from 0 to n, वहाँ से आप bj निकाल सकते हैं बाहर, so it will be bj intersected with union of ai's, union of ai's is e, so it will be bj intersected with e। ठीक, bj is a subset of e, so bj intersected with e will be bj, so this is actually mu star bj, राइट। और मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज फर्दर इक्वल
सिग्मा, चूंकि लिटिल ए नॉट एंड लिटिल बी नॉट दे आर जीरो, तो वो वाली टर्म्स को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं आई रन फ्रॉम 1 to n a sub I mu star a sub I plus sigma j runs from 1 to m b sub j mu star b sub j. ठीक है ना? Now what is this? This is actually क्या है ये? This is the integral of phi d, है ना? Because ai chi sub ai summation I runs from 1 to n is the standard representation of phi. So therefore this is integral phi. And what is this? This is integral of psi. That means we have shown that integral phi plus psi d mu is integral phi d mu plus integral psi d mu. So that means the big integral for stub functions is what? Is additive. Homogeneity मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ because that is trivial. वो कोई काम ही नहीं करना है आपको. हमें ऑलरेडी पता है if phi is a stub function then alpha phi is also a stub function, so therefore you can integrate this. और आपको दिखाना है कि ये आपके लिए एक्सरसाइज है. Integral alpha phi d mu where alpha is a scalar, phi is a stub function. आपको दिखाना है this is equal to alpha times integral phi d mu. ठीक है, this is trivially true if alpha is 0. ये नॉन ट्रिवियल केस में आपने बस एक चीज ऑब्जर्व करनी है. If alpha is non-zero and if phi equal to a1 chi sub a1 plus a2 chi sub a2 plus so on an plus chi sub an be the standard representation of phi, then the standard representation of alpha phi if alpha is non-zero. अगर alpha non-zero है, क्योंकि alpha equal to 0 is the trivial scenario, वो easily discuss होगा. And if alpha is non-zero, उस केस में alpha phi की जो standard representation होगी, it will be alpha a1 chi sub a1 plus alpha a2 chi sub a2 plus so on plus alpha an chi sub an. And the integral will be what? Integral alpha phi d mu. It will be summation I runs from 1 to n alpha ai mu star ai. अल्फा हर जगह आ रहा है, इसको आप कॉमन लीजिए एंड you'll get the result. और मैंने खुद ही आपको जबानी बताया, लेकिन इसको फॉर्मली लिखिएगा. सो ये दो चीजें जब आप कंबाइन करेंगे आप फिर देख सकते हैं कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली अ लीनियर फंक्शनल. ठीक है, integral which takes s to r, it is additive as well as homogeneous, so therefore it's linear. It's a linear function. यही था हमारा आज का टॉपिक, linearity of Lebesgue integral for stub functions. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मुझे लेट भी हो गया 3:30. अब देखिए इसकी मैंने स्ट्रीमिंग ना करी है यूट्यूब पर, मैं इसकी लिंक आपको ना कुछ ही देर में वो फॉरवर्ड करूंगा आपके ग्रुप में. जैसे ही आपको टाइम मिलता है ना इसको देख लीजिएगा, ठीक है. और अगर दोबारा देखने में मतलब जब आप इसको दूसरी बार देखेंगे, अगर तब भी आपको कोई कंफ्यूजन हुआ ना तो वो नोट करके रखिएगा और कल मुझसे आप वो चीज़ पूछिएगा, लेकिन देखिएगा क्योंकि ये भी है ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. सर आपने बोला था ना कुछ एम्बिग्युइटी है इसको स्टार्ट. हाँ आपने बोला था ना इसमें एक चीज हमने नहीं देखी है डेफिनेशन के बारे में. हाँ, वो एम्बिग्यूटी वो इंशाल्लाह वो कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली ना आज बहुत लेट हो गया इसमें, मुझे थोड़ा सा काम भी है अपना ही कर इंशाल्लाह वो कल मैं आपको बताऊंगा. बेसिकली वो जो कल भी मैंने ना आपको वो दिखाया था कि इवन इफ यू यूज अ नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन तब भी वो आपके इंटीग्रल का वैल्यू सेम आया था ना कुछ. मतलब एक्चुअली एम्बिग्यूटी, चलिए मैं आपको वो जल्दी में बता देता हूँ. एम्बिग्यूटी असल में ये है, सपोज यू हैव अ स्टब फंक्शन.
अब जो स्टफ फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ characteristic functions, every step function can be written as a linear combination of characteristic functions. मैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ. बट द प्रॉब्लम इज दिस जनरल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक. So that means there can be multiple representations for the same step function. अब चूंकि इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है इट इज इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस, तो देयर वाज एवरी मतलब यहाँ ना एक खतरा था फिर दैट द डेफिनेशन माइट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मतलब रिप्रेजेंटेशन चेंज करने से इंटीग्रल का वैल्यू अगर चेंज होता तो दैट वुड नॉट हैव बीन एन आइडियल सिचुएशन. इनफैक्ट ये फिर मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ही नहीं होती. बट ऐसा इसमें नहीं है. चाहे आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन लें, इंटीग्रल जो है वो वही आएगा. इनफैक्ट इसको देखने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास अब आ गई है. लेट्स सपोज you have you have two representations. ध्यान से देखिएगा. Suppose you have two representations, a1 या ऐसे लिखिए ai का सब ai where I runs from 1 to n, and suppose we also have uh, sigma I runs from not I, let's say j runs from 1 to say sig m bj chi sub bj. Let's suppose these are the two representations of the same step function phi. ठीक. अब क्वेश्चन है आप इंटीग्रल इससे कंप्यूट करेंगे या इससे कंप्यूट करेंगे. मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे आप इससे कंप्यूट करें या इससे कंप्यूट करें, इंटीग्रल वैल्यू विल बी सेम. अब कैसे? अब चूंकि दिस एंड दिस दे आर सेम, तो दिस माइनस दिस अगर आप ये करेंगे सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n a sub I times chi sub a sub I minus sigma j runs from 1 to m b sub j chi sub b sub j. अगर आप ये डिफरेंस लेंगे what will be the difference? क्योंकि इक्वल है ये दो सम, so difference will be 0. ठीक. Now what will be integral 0? Integral 0 d mu. 0 is a step function और इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे, what is the standard representation of 0? कोई बता सकता है आप में से? जीरो को आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 times chi sub phi. नॉट जस्ट 1, आप 2 3 कुछ भी ले सकते. अगर आप इसे देखेंगे व्हाट इज दिस, इट्स 0. तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. अब इसका इंटीग्रल क्या होगा फिर? इट विल बी 1 times mu star phi. Mu star phi is 0. 1 times 0 is 0. So this is 0, right? Now this is also equal to integral of क्योंकि 0 is equal to this sum minus this sum. मैं यही लेकिन मैं खोल के नहीं लिखूंगा. So it will be a1 chi sub a1 plus a2 chi sub a2 ये ध्यान से देखिएगा क्या करना. प्लस ऑन प्लस a sub n chi sub a sub n. Then we have minus b sub 1 chi sub b sub 1 minus माइनस को आप लिख सकते हैं ऐसे प्लस माइनस b sub 1 times then plus
minus b sub 2 times chi sub b sub 2, then plus so on, plus minus b sub j times sorry not j, b sub m times chi sub b sub m, right? अब देखिए यहाँ पर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्वांटिटी है ना, एज अ होल मैं बात कर रहा हूँ, जिसका इंटीग्रल आप यहाँ ले रहे हैं, एज अ होल अगर आप देखेंगे इसको, although it's a step function but this need not be the standard representation, क्योंकि आपको नहीं पता whether these ai's bj's are disjoint or not, जो कि important है standard representation के लिए, ठीक। हाँ, अगर आप इनको इंडिविजुअली लेके देखेंगे, मतलब इसे अगर आप इनको इंडिविजुअली देखेंगे, ये अकेला अगर देखेंगे, इट्स अ स्टेप फंक्शन और यही इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। सेम इज द केस विद दिस, अगर आप इसे इंडिविजुअली देखेंगे तो इट्स अ स्टेप फंक्शन और इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यही है, ठीक। और फिर अगर आप अभी वाली थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया इंटीग्रल इज एडिटिव, सो यू कैन ब्रेक द इंटीग्रल, सो दिस विल बी इंटीग्रल a sub 1 chi sub a sub 1 plus integral a sub 2 chi sub a sub 2 plus so on, plus integral a sub n chi sub a sub n, right? Then plus integral minus b sub 1 chi sub b sub 1, then plus integral minus b sub 2 chi sub b sub 2, plus so on, plus integral minus b sub m chi sub b sub m, ठीक है ना। अब इंडिविजुअली अगर आप इन्हें देखेंगे, इन्हें आप इवेलुएट कर सकते हैं, जो डेफिनेशन है आपके लिए दैट परटेन्स टू स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस। अब यहाँ जो इंटीग्रल के अंदर ये है, इट्स अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, तो आप ये यूज कर सकते हैं डेफिनेशन। सो इट विल बी a1 म्यू स्टार a1, यहाँ से क्या मिलेगा, इट विल बी बीच में प्लस है, सो इट विल बी प्लस a2 म्यू स्टार a2, और अगर ये पूरा सम आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, सो इट विल बी दिस सिग्मा i runs from 1 to n ai म्यू स्टार ai, और इसके बाद ये क्वांटिटीज, इनमें ये हर एक में माइनस साइन है, सो इट विल बी माइनस सिग्मा j runs from 1 to m b sub j म्यू स्टार b sub j, और इनके लेफ्ट साइड में क्या है, वहां पर जीरो है, तो आप क्या करिए, इस क्वांटिटी को ट्रांसपोज करिए, मतलब यू ऐड थ्रू आउट बाय दिस क्वांटिटी, तो क्या मिलेगा आपको, जब आप इसे वहां ले जाएंगे आपको ये मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्मा i runs from 1 to n a sub I, this is n here, a sub I chi sub a sub I, sorry, I runs from 1 to n a sub I mu star a sub I, this is equal to sigma j runs from 1 to m b sub j mu star b sub j. So that means integral is independent of the representation. चाहे आप ये representation use करें या ये representation use करें, it doesn't matter. क्योंकि eventually the quantities will be same. This and this, they are same, means it's independent of the representation. So therefore it's a perfectly valid definition in mathematics, जो हमने कल देखी थी. It's a perfectly valid mathematical definition because it has no ambiguities. जहाँ ambiguity होती है वो, अगर इसमें ऐसा नहीं होता, मतलब अगर खुदा न खास्ता इसमें ऐसा होता कि this depends upon the representation, तो ये फिर ambiguous होती, यहाँ फिर लड़ाई होने का खतरा था। कोई अगर ये रिप्रेजेंटेशन यूज करता और दूसरा बंदा ये रिप्रेजेंटेशन यूज करता, और अगर डिफरेंट आंसर्स आने का खतरा रहता, तो फिर इसका आंसर और इसका आंसर मैच नहीं करता, और फिर ये आपस में लड़ाई करता, ये कहता मेरा सही है, ये कहता मेरा सही है, और जो ऑडियंस थी उनके लिए एक एम्बिग्यूअस सिचुएशन थी, वो आप किसका मानते, तो आपको सुनाइए, आपको सुनाइए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज करिए, यू विल गेट द सेम थिंग। ये थी वो एम्बिग्यूटी जिसकी मैं बात कर रहा था।
और वो इस थियरम की मदद से अब आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बेसिकली लीनियरिटी, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है जो ये वाला इंटीग्रल था इसको इवेलुएट करने में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो हम गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें होनी चाहिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। बहरहाल इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से जो मसला है ना, इसको ना आप खुद ही नहीं कह सकते इट इज स्टैंडर्ड। हाँ, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करेंगे देन यू गेट जो इंडिविजुअल पीसेस है वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, तो यू कैन यूज दैट जो हमने कल वो डेफिनेशन ली थी। सो एंड और आप दिखा सकते हैं कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस। अब इसको देख लीजिएगा, ये यूट्यूब लिंक मैं आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कल क्लास में बता दीजिएगा, ठीक है? कोई और क्वेश्चन है अभी? चलिए फिर ठीक है, इंशाल्लाह कल देखते हैं। आप इसको आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रूफ तो ऑलरेडी वहाँ आया होगा यूट्यूब वीडियो में, तो इसको आप आराम से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कल बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज़।